Hi students, welcome back to Chaitanya Mathematics Academy classes. This is intermediate first year A trigonometry long answer questions. Okay, so previous class में short answer questions हो गए ना, ये long answer questions है 7 marks वाला. Okay, if capital A, capital B, capital C are angles in a triangle, then prove that sin 2A minus sin 2B plus sin 2C equals to 4 into cos A sin B cos C. Okay, right. So solution of first long question. Okay, so given LHS is sin 2A. Okay, first of all A comma B comma C are angles of triangle, angles in a triangle, angles in triangle. Okay, so that is, so sum of interior angles capital A, capital B plus capital C equals to, we have 180 degree. Okay, so capital A, B, C are angles in a triangle means we can use the condition A plus B plus C equals to 180 degree. Sum of three angles equals to 180 degree. Now the question is given sin 2A minus sin 2B plus sin 2C. We have to prove that answer is 4 cos A sin B and cos C. 4 cos A into sin B into cos C. Okay, right. See, we have a formula sin C minus sin D formula. We have already in trigonometric formula sin C minus sin D. Sin C minus sin D formula is 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D means 2A minus 2B by 2. Okay, up to here this one formula completed. Okay, sin C minus sin D, and this last one sin 2C as it is. Okay, last two terms, last term को as it is लिख लो. Okay, right. We have here a formula. We have a formula sin C minus sin D. Sin C minus sin D formula is 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2. This is the formula we have. Okay, ये formula अपने को है. Sin C minus sin D formula is 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2. In this problem C के जगह पे क्या है 2A and D के जगह पे 2B है. ओके, सो ये फार्मूला में C प्लेस में 2A सब्स्टिट्यूट करें एंड D प्लेस में 2D सब्स्टिट्यूट करें. 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2 and last one as it is sin 2C. Okay, so that implies 2 as it is and cos as it is. See, from the numerator 2 is the common. From numerator 2 is the common means remaining A plus B by 2. Okay, clear? And in this also 2 is the common. 2 is the common means A minus B. From numerator 2 is the common, denominator 2 as it is. Right? Numerator में क्या common है? 2 common है and इसमें भी numerator में 2 common है. 2 common निकाल दिए. Okay, next again this one also as it is in this step also. Okay, see 2 cancel, 2 get cancel. Okay, what is the remaining? 2 cos of A plus B, 2 cos of A plus B into sin of A minus B. Okay, and plus again this one as it is. ओके, एक 3-4 स्टेप्स तक ये जो लास्ट टर्म रहता ना वो एज इट इज सेम लिखना. राइट. सो इसमें देखो एक बार स्टार्टिंग अपने को एक कंडीशन था इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो 2 cos ऑफ A प्लस बी. A प्लस बी, इसमें A प्लस बी है ना, सो A प्लस बी वैल्यू क्या होता है इसमें से प्लस सी उधर चले गए तो माइनस सी होता है. ओके, प्लस सी बिकम टू द राइट साइड इज माइनस सी. ऑलरेडी 180 डिग्री इज देयर. ओके, 180 डिग्री
plus c become minus c, means a plus b can be written as 180 minus c. So means 180 minus c, okay, into this one as it is, and again the last term also as it is, sin 2c, ओके, साइन 2c. a प्लस बी को क्या करें अपन, प्लस सी राइट साइड में लिए तो क्या हुआ, माइनस सी, मीन्स a प्लस बी की जगह पे 180 माइनस सी, a माइनस बी इन दिस वन एज इट इज, ओके. c 180 माइनस टीटा, राइट. सो 180 माइनस टीटा क्या है फार्मूला अपने को, 2 cos ऑफ 2 180 माइनस c, सो 2 into 180 cos of 180 minus theta means you can write minus cos theta. 180 minus theta means minus cos theta, okay. c cos of 180 minus theta, c को theta ले लेंगे, okay. cos of 180 minus theta, cos of 180 minus theta means minus cos theta, theta की जगह पे c है, c सब्स्टिट्यूट करें, remaining sin of a minus b as it is, sin of a minus b as it is. see now we have to change this one. ये कब तक सेम लिखना, यहाँ पे एक टर्म आता, ये टर्म आया जब तक ये सेम लिखते आना. अभी यहाँ पे cos c आया ना, सो sin 2c को cos c टर्म आया जैसा फार्मूला सब्स्टिट्यूट करना, ओके. sin 2c कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ cos. यहाँ पे cos आया बोले तो cos आया जैसे लिखना, sin आया तो sin आया जैसे लिखना. वी हैव sin 2 थीटा फार्मूला, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, ऐसा ऐसे लिखे तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल C है, ओके. सो यहाँ पे cos C आया, sin 2c को cos C आया जैसे लिखना, sin 2 थीटा फार्मूला इज 2 sin थीटा cos थीटा. कौन सा फार्मूला अप्लाई करें यहाँ पे अपन, cos ऑफ 180 माइनस थीटा, cos ऑफ 180 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज minus cos theta, okay. and sin 2 theta formula, sin 2 theta formula we know already, 2 sin theta and cos theta, 2 sin theta into cos theta. ये दो फार्मूला अप्लाई करें अपन, cos of 180 minus theta can be written as minus cos theta, theta के जगह पे c है, and sin 2 theta can be written as 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta, theta की जगह पे क्या है यहाँ पे c है, ओके, राइट. नेक्स्ट सो c 2 cos c एंड इसमें भी 2 cos c है, ओके. 2 into cos c एंड 2 into cos c, दोनों में 2 cos c है, दोनों में से 2 cos c कॉमन निकाल दो, ओके. सो माइनस 2c कॉमन निकालने से पहले नहीं तो प्लस 2 cos c, 2 cos c is the common, okay. 2 cos c is the common. What is the remaining, minus remaining, sin of a minus b remaining, okay. sin of minus 2 cos c common completed means यहाँ पे remaining क्या है, minus sin of a minus b plus as it is, okay. and then 2 cos c completed, remaining is sin c, okay, right. 2 cos c common completed, what is the remaining, minus sin of a minus b plus 2 cos c completed means remaining sin c, okay, right. so 2 cos c as it is, 2 cos c as it is, and again a minus b को अपन कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, so write as it is, and from this c can be written as, यहाँ पे देखो एक बार, हर प्रॉब्लम में ये टाइप्स के हर प्रॉब्लम में a प्लस बी के जगह पे अपन कौन सा सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्लस सी बिकम माइनस मीन्स 180 माइनस सी. सो ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में a प्लस बी के जगह पे 180 माइनस सी सब्स्टिट्यूट करना एंड c के जगह पे 180 माइनस ऑफ a प्लस बी. यहाँ पे देखो एक बार अपने को कौन सा वैल्यू होना, c वैल्यू. वी हैव टू राइट, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट कैपिटल c वैल्यू. कैपिटल c वैल्यू इज दिस वन, मीन सेंड द a plus b term to the right side. So a plus b is positive, it will become negative, means 180 minus of a plus b. So substitute c value is 180 minus of a plus b, 180 minus of a plus b. Here the formula is capital C equals to 180 minus of a plus b.
substitute capital C value 180 minus of A plus B. Okay, right. Now 2 as it is, cos C as it is, and minus sin of A minus B as it is, minus sin of A minus B as it is, right, plus sin 180 माइनस थीटा, इसको क्या समझेंगे, थीटा समझेंगे. ओके, sin 180 माइनस थीटा, वी हैव द फॉर्मूला sin 180 माइनस थीटा. Sin 180 minus theta means we can write the formula is sin theta. Cos 180 minus theta means minus cos theta. Sin 180 minus theta means plus sin theta. Okay, right. Substitute sin 180 minus theta. What is the theta value here? A plus b. A plus b को अपन क्या समझे, थीटा समझे. मीन्स साइन ऑफ 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा. साइन theta. What is theta value? A plus b. What is theta value? A plus b. Okay, right. So 2 cos C, capital C as it is. Write this one. Plus term first लिखो. Sin of A plus b. Okay. Sin of plus term है ना, plus term first लिखे. ये minus term बाद में लिखेंगे. Minus sin of A minus b. Right. So 2 cos C as it is. Now see this formula is, formula of this one we have the formula directly. 2 sin of A plus B minus sin of A minus B means 2 cos A sin B. 2 cos A sin B. Sin of A plus B plus, sorry, minus sin of A minus B. We have the formula. So here the formula is, we used sin of A plus B minus sin of A minus B equals to, the formula is 2 cos A sin B. We have this formula. Formula is very important. Without formula we can't do the 7 marks problem, even single problem. Okay, right. Next to see the final answer. 2 into 2 4. Right, first of all A term cos A, next B term sin B, next C term cos C. Okay, so 4 cos A into sin B into cos A. सिंपल है प्रॉब्लम, कुछ भी टेंशन नहीं है. सो मैक्सिमम 6-7 या प्रॉब्लम्स रहते हैं. एक प्रॉब्लम में कुछ डाउट रहा तो दूसरे प्रॉब्लम में क्लियर हो जाता. सी वंस अगेन, sin 2A माइनस sin 2B प्लस sin 2C, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू, वी हैव 180 डिग्री इज द फार्मूला. ओके, sin C माइनस sin D. व्हाट इज द फार्मूला? 2 cos C plus D by 2 sin C minus D by 2. What is the C value? 2A. And what is the D value? 2B. ये फार्मूला में C के जगह पे 2A सब्स्टिट्यूट करना, D के जगह पे 2B सब्स्टिट्यूट करना. ओके, नाउ 2 cos, from numerator 2 is the common, in this also from numerator 2 is the common. 2 cancel means write the remaining A plus B into A minus B, and A plus B, we have A plus B extra plus C, so plus C become minus C, means A plus B value is 180 minus C. Substitute A plus B value 180 minus C and remaining as it is. Okay, and cos of 180 minus theta, we have cos of 180 minus theta formula is minus cos theta. यहाँ पे cos के बाजू में जो भी है उसको अपन theta समझे. सो सॉरी, 180 माइनस के बाजू में क्या है वो theta समझे. Here theta is C value. So cos of 180 minus theta can be written as minus cos theta. What is theta value? C. And this one same. So we have now cos C. Write this term in terms of cos C. Write the sin 2C formula in terms of cos, means we have the sin 2 theta formula, 2 sin theta cos theta. In this we have C, means 2 sin C cos C. C 2 into cos C, 2 into cos C, means that means 2 cos C is the common, remaining minus sin of A minus B plus sin C, and this one as it is capital C. Capital C can be written as 180 minus of A plus B. Okay, now right, C value substitute कर दे. 2 cos, this one same, 180 minus theta, sin of 180 minus theta is sin theta, sin theta.
So positive term first लिखो, negative term last में लिखो, and we have this formula 2 cos A sin B, 2 into 2 4, cos term first A term, then B term, then C term. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. इसका सिमिलर प्रॉब्लम्स भी है, पूरे के पूरे 1 by 1 प्रॉब्लम सिंपल और स्लो भी एक्सप्लेन करते बोलेंगे. ओके, राइट. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2. means see the problem is if capital A comma capital B comma capital C are angles in a triangle. Okay, then prove that sin A plus sin B minus sin C equals to 4 sin A by 2 sin B by 2 into cos C by 2. Okay, same by previous problem. A comma B comma C are angles in a triangle, angles in a triangle. Okay, so angles in a triangle means that is again we can use the condition a capital A sum of 3 angles equals to 180 degree. Okay, sum of 3 angles equals to 180 degree. Okay, that implies see the problem में देखो एक बार प्रॉब्लम में सॉल्यूशन में a by 2 b by 2 c by 2 दिए. राइट, प्रॉब्लम में क्या दिए, कैपिटल a by 2 कैपिटल b by 2 कैपिटल c by 2 मीन्स कैपिटल a प्लस कैपिटल b प्लस कैपिटल c है डिवाइड विथ 2. राइट, a प्लस b प्लस कैपिटल c by 2 equals to 180 by 2. क्लियर. ओके, a प्लस b प्लस c by 2 equals to 180 by 2. ओके, right. So a plus b plus c equals to 180 divide with 2. divide with 2 को कर रहे हैं RHS में a by 2 b by 2 c by 2 है, that's why divide with 2 on both sides. Okay, separate a by 2 plus b by 2 plus c by 2. Okay, equals to 180 by 2 means 2 9s and 0, 2 1 2 9 0 means now we have the condition a by 2 plus b by 2 plus c by 2 equals to 90 degree. Okay, right. From this we can write a by 2 plus b by 2 equals to we can write 90 degree plus c by 2 become minus c by 2. Right, so we have to use a by 2 plus b by 2 formula is 90 degree minus c by 2, and also c by 2 capital C by 2 means capital C by 2 means plus a by 2 become minus a by 2 plus b by 2 become minus b by 2. Overall a by 2 plus b by 2 is become minus means already we have in the right side 90 degree. Okay, minus of a by 2 plus b by 2, a by 2 plus b by 2, 90 minus of a by 2 plus b by 2. so ये प्रॉब्लम में अपन ये दो फार्मूलास सब्स्टिट्यूट करना पड़ता. व्हाट इज द फर्स्ट वन, a by 2 plus b by 2 equals to 90 minus c by 2 and c by 2 equals to 90 minus of a by 2 plus b by 2. and what is the question, right side what is the LHS, sin a plus sin b plus sin a plus sin b minus sin c. राइट, सो राइट साइड जो दी है अपन वो प्रूव करना पड़ता. व्हाट इज द आंसर, 4 इंटू साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू कास सी बाई 2. ओके, राइट. सो साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी, सेम प्रोसेस. द प्रीवियस प्रॉब्लम में कौन सा प्रोसेस करें, सेम प्रोसेस. टर्म्स आर डिफरेंट बट द प्रोसेस विल बी सेम. ओके, साइन सी प्लस साइन डी फार्मूला, sin C plus sin D formula. Here I am writing the formula sin C plus sin D formula. Sin C plus sin D means 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2. This is the formula. Okay, so sin C plus sin D formula is 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. यहाँ पे एक बार ऑब्जर्व करो, इसमें प्रीवियस प्रॉब्लम में यहाँ पे माइनस था, प्रीवियस प्रॉब्लम में यहाँ पे माइनस था. इफ हियर माइनस देन फर्स्ट टर्म इज cos, सेकंड टर्म इज sin.
Okay, remaining formula same. If minus is in between two sine terms, then first term is cos, second term is sine. If plus term is there, then first one is sine, then second one is cos. Okay, this is plus formula. Okay, this is first two terms in the form of sin c plus sin d. So 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. What is c value here? Capital A. What is d value? Capital B. Means in this formula we have to substitute capital C is A and capital D is B. C के जगह पे A लिखना and D के जगह पे B लिखना. Okay, so 2 sin C plus D by 2 means A plus B by 2 into cos C minus D by 2 means A minus B by 2. लास्ट टर्म ऑलरेडी लास्ट प्रॉब्लम में बोले थे ना, जो भी लास्ट टर्म है ये लास्ट टर्म एक 3-4 स्टेप्स तक सेम एज इट इज लिखना. ओके राइट, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा. सेपरेट द बाई 2 टर्म. 2 साइन ऑफ a प्लस b by 2 मीन्स वी कैन राइट a by 2 प्लस b by 2, जस्ट सेपरेट, एंड इनटू cos ऑफ a minus b by 2 मीन्स a by 2 minus b by 2. Okay, minus sin c. Clear? Just separate kare, separate the 2 only and remaining sin c as it is. C in this, now we have the formula. First box, the formula is a by 2 plus b by 2 can be written as 90 minus of c by 2. 2 same, sin same, just substitute a by 2 plus b by 2 is 90 degree minus c by 2. Clear? And remaining as it is cos of a by 2 minus b by 2 and minus sin c again same. Clear? Just substitute a by 2 plus b by 2 as 90 minus c by 2, and in this we have the formula sin of 90 minus theta. Sin of 90 minus theta equals to cos theta. Sin of 90 minus theta value is cos theta, means 2 as it is and cos sin of 90 minus theta, इसमें c by 2 को क्या ले रहे हैं अपन? थीटा ले रहे हैं. ओके, sin of 90 minus theta, c by 2 considered as a theta, means sin of 90 minus theta means cos theta. So cos theta, what is theta value? c by 2. Clear? And this one again as it is cos of a by 2 minus b by 2. Clear? Now c, यहाँ पे एक टर्म आ गया अपने को, सो ये cos c by 2 आया ना, ये जो sin c है इसको अब चेंज करना पड़ता. कैसे चेंज करना? यहाँ पे जो भी टर्म आया ये टर्म उसमें आया जैसे लिखना. मीन्स अगेन वी हैव द फॉर्मूला sin थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा by 2 इंटू cos थीटा by 2. ओके, सेम फार्मूला इससे पहले साइन 2 थीटा का लिखे थे. यहाँ पे 2 थीटा रहा तो यहाँ पे थीटा थीटा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 2 थीटा रहा, समझो 2 थीटा में हाफ कितना? 1 थीटा. सो यहाँ पे 1 थीटा, यहाँ पे 1 थीटा. इसमें यहाँ पे 4 थीटा है, समझो 4 थीटा में हाफ 2 थीटा, मीन्स 2 साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा. यहाँ पे थीटा रहा तो थीटा में हाफ थीटा बाई 2, इसलिए थीटा बाई 2 थीटा बाई 2. फार्मूला सेम, दैट विल दिस विल डिपेंड ऑन थीटा. ओके, 1 थीटा रहा तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, 2 थीटा रहा तो 1 थीटा 1 थीटा, 4 थीटा रहा तो इवन नंबर्स में 4 थीटा रहा तो सपोज 3 थीटा है, 3 थीटा बाई 2 3 बाई 2 हाफ आता उसमें. ओके राइट. सी cos ऑफ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दिए, इसमें एक ही टर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डबल प्लेस का को वेस्ट. ओके, यहाँ पे क्या करेंगे? प्लेस उसमें फार्मूला उसमें चेंज करके साइड में लिखेंगे. ओके, हियर आई एम राइटिंग एंड cos थीटा कंप्लीटेड. ओके, एंड द फार्मूला इज एंड और कौन सा फार्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें अपन? साइन थीटा. ओके, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2. These are the two formulas. Okay, right. Sin theta, theta means here c, means 2 sin theta by 2 into cos theta by 2.
2 sin theta by 2 into cos theta by 2. Clear? Okay. Okay, 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 means theta means here c. Okay, right. C, in this 2 cos theta by 2 common, cos c by 2 common, in this 2 cos c by 2 common. From the two terms, the common term is 2 cos c by 2. दोनों में 2 cos c by 2 है. So let the common term is 2 cos c by 2 outside. Okay, 2 cos c by 2 common completed. In this remaining cos of a by 2 minus b by 2, cos of a by 2 minus b by 2 minus 2 कॉमन कंप्लीटेड, cos c by 2 कॉमन चले गया, रिमेनिंग क्या है sin c by 2. ओके, sin c by 2. राइट. सो नेक्स्ट स्लाइड में, राइट, नेक्स्ट, राइट, सो 2 cos c by 2 द प्रीवियस टर्म सेम अगेन एज इट इज लिख रू 2 cos c by 2. okay, 2 cos c by 2 into cos of a by 2 minus b by 2, cos of a by 2 minus b by 2 and minus sin c by 2. the previous slide में जो भी टर्म लिखा वो as it is और एक बार लिखा. right, now 2 cos c by 2 as it is. okay, cos of a by 2 minus c by 2 as it is लिखा. और यहाँ पे स्टार्टिंग में सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अपन c by 2 का एक बॉक्स ड्रा करें ना. अपन c by 2 के बदले में क्या लिखना बोल के एक बॉक्स में लिखे थे, क्या लिखे थे अपन 90 डिग्री माइनस ऑफ a by 2 प्लस b by 2. राइट, c by 2 के बदले में क्या लिखना बोल के अपन सॉल्यूशन स्टार्टिंग में बताए थे, एक बार देख सकते बाद में. ओके, राइट. नेक्स्ट, नाउ 2 cos c by 2 as it is, 2 cos c by 2 as it is, and this one also again same 2 cos a by 2 minus b by 2, cos of a by 2 minus b by 2. now the formula is here sin of 90 minus theta, sin of 90 minus theta, sin 90 minus theta, इसको theta ले रहे, sin of 90 minus theta can be written as cos theta. ऑलरेडी लास्ट प्रॉब्लम में यूज करे ओपन. ओके, माइनस sin 90 minus theta is cos theta. what is theta value? a by 2 plus b by 2. okay, a by 2 plus b by 2. right. okay, next this one 2 cos c by 2 as it is. okay, 2 cos c by 2 as it is, and this one we have the formula again cos c minus cos of a plus b into cos of a minus b, cos of a minus b minus cos of a plus b can be written as 2 sin a sin b. ये अपने को है सो स्टैंडर्ड फार्मूला है. ओके, 2 sin a sin b. एक बार देखो ये फार्मूला cos of a minus b, cos a minus b, इसको a समझेंगे, इसको b समझेंगे. ओके, cos of a minus b minus cos of a plus b, फार्मूला इज 2 sin a sin b means 2 sin a sin b. a के जगह पे यहाँ पे क्या है a by 2 है, b के जगह पे क्या है b by 2. क्लियर. ओके, जस्ट एज्यूम कर ले रहे अपन a by 2 considered as a, b by 2 considered as a b. so cos of a minus b minus cos of a plus b, formula is 2 sin a sin b. 2 sin a means a by 2, sin b means b by 2. see, 2 into 2 4. first of all a term, what is the a term? sin a by 2. and what is the b term? sin b by 2. and what is the c term? cos c by 2. this is required solution or required proof. okay, 4 sin a by 2 into sin b by 2 into cos c by 2. this is the
solution number 2. Okay, so कितने हो गए लॉन्ग क्वेश्चन? 2 हो गए. सिमिलर प्रॉब्लम्स, जस्ट लिटिल बिट स्मॉल चेंज. सिमिलर प्रॉब्लम्स वेरी इजी. स्मॉल प्रॉब्लम्स है, थोड़ा कंफ्यूज पार्ट ज़्यादा रहता, थोड़ा लेसन केयरफुल्ली सुनना और प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस करे, समझो क्लियरली, अपने को कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहता. ओके, क्लियर. नाउ we will go to the third problem. Okay, again similar problem. I am writing the question. Okay, problem number 3rd. Okay, right. Next the problem is, if capital A comma capital B comma capital C are angles in a triangle, then prove that cos square A plus cos square B minus cos square C equals to 1 minus 2 sin A into sin B into cos C. Okay, so solution, same condition again. Capital A comma B comma C are angles in a triangle, or angles in a triangle. Then we can use the condition sum of 3 angles equals to 180 degree. So that is capital A plus capital B plus capital C are the angles, means sum of 3 angles equals to 180 degree. Okay, see solution में यहाँ पे A है ना. Okay, right. Okay, A plus B plus C equals to 180 degree. Okay, so again same, A by 2 plus B by 2 plus C by 2. Okay, equals to 180 by 2 means 90 by 2. प्रॉब्लम में क्या आपने को, राइट. सो 180 माइनस सी, आई थिंक बाई 2 का जरूरत नहीं पड़ता अपने को. ओके, जरूरत पड़े तो अपन देखेंगे. ओके, फ्रॉम दिस वी कैन सब्स्टिट्यूट A plus B equals to, A plus B can be written as plus C become minus C, 180 degree minus C, first box. Okay, then capital C can be written as 180 minus of A plus B become minus of A plus B. This is the second box. We have to substitute these two formulas in the solution. Okay, right. So A plus B plus C equal to 180 degree means A plus B can be written as 180 minus C, plus C become minus C, and capital C can be written as 180 minus of A plus B. Right. So write the question. Cos square A plus cos square B minus cos square C, cos square B plus cos square B minus cos square C, cos square A plus cos square B minus cos square C. Okay, right. So see, ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है. इससे पहले बोले सो प्रॉब्लम सिंगल था, जस्ट 2a cos 2a sin 2a cos c 2c और sin a plus sin b minus cos c. डिफरेंट था, ओनली 2a 2b 2c था और a b c था. इसमें स्क्वायर है. स्क्वायर रहा सो प्रॉब्लम में फर्स्ट क्या है बोले तो स्क्वायर रहा सो प्रॉब्लम में सी. एक हिंट बता रहा हूं मैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b आए जैसा सिंप्लीफाई करना. क्लियर. स्क्वायर रहा सो प्रॉब्लम में ये टर्म्स आना अपने को, राइट. सी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, a टर्म शुड बी cos, b टर्म शुड बी साइन. a के बाजू में cos रहना, b के बाजू में साइन रहना, और cos स्क्वायर a शुड बी पॉजिटिव, साइन स्क्वायर b शुड बी नेगेटिव. ओके, सी cos स्क्वायर a तो है clear, and cos square a also positive, but there is no sin square b, means a term should be cos and also it is positive, a terms also cos and it should be positive. A term cos में रहना, b term sin में रहना. Clearly listen once again, a term किस में रहना, cos में रहना, b term sin में रहना, और a term कंपलसरी प्लस रहना, b term कंपलसरी माइनस. दो कंडीशन है. व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? a term should be cos, first condition, right. b term should be sin. What is the first condition? a term should be cos, b term should be sin. Okay, a term cos में रहना, b term sin में रहना, first condition. And what is the second condition? a term should be positive, b term should be negative. a term को प्लस रहना, b term को माइनस रहना. ओके, राइट. सी cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a. ओके, a term should be cos and positive,
बी टर्म शुड बी साइन नेगेटिव, बट बी टर्म साइन नहीं है, बी टर्म को फर्स्ट साइन में कन्वर्ट करना मीन्स cos स्क्वायर ए को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, बी टर्म शुड बी चेंज मीन्स cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना मीन्स cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय द आइडेंटिटी फार्मूला। cos square theta can be written as 1 minus sin square theta. I am writing the formula cos square theta. We have the formula 1 minus sin square theta. Clear? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ए टर्म cos रहना और वो भी पॉजिटिव, बी टर्म साइन में रहना वो भी नेगेटिव। यहाँ पे बी टर्म साइन नहीं है cos है, फर्स्ट इसको साइन में कन्वर्ट करें, फिर साइन टर्म नेगेटिव रहना नेगेटिव ही है, राइट। नेक्स्ट लास्ट टर्म, इसमें भी एक 2-3 टर्म्स तक सेम रहता। क्लियर? ओके, राइट। नेक्स्ट राइट द फर्स्ट वन, फर्स्ट ऑफ ऑल वो वन पहले लिख दिए, बाद में प्लस cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, प्लस cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये दो को ब्रैकेट में डाल देंगे। क्लियर? एंड लास्ट वन एज इट इज cos स्क्वायर सी। क्लियर? ओके, राइट। वन फर्स्ट लिख दिए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एक जगह पे लिख के रिमेनिंग एज इट इज। एंड अगेन वी हैव द फार्मूला cos of cos square a minus sin square b formula is cos of a plus b into cos of a minus b, cos of a plus b into cos of a minus b. We have this formula. What is the cos square a minus sin square b formula? Cos square a minus sin square b formula is cos of a plus b into cos of a minus b. One is as it is plus what is this formula? Cos of a plus b into cos of a minus b, cos of a plus b into cos of a minus b, and again last one as it is cos square c. ओके, cos ऑफ a प्लस बी इंटू cos ऑफ a माइनस बी फार्मूला लिख दिए। ये फार्मूला है अपने को। ओके, ये जो ब्रैकेट में लिखा ना ये फार्मूला है। ओके, राइट। सो दैट इम्प्लाइज वन एज इट इज, cos as it is, c a plus b. What is a plus b? A plus b value is 180 minus c, 180 degree minus c. Clear? One completed. Plus also as it is, cos as it is, a plus b is 180 minus c into cos a minus b as it is, and minus cos square c also as it is. Clear? Okay, then now 180 minus c, cos of 180 minus c, here is one more formula, cos of 180 minus theta, ऑलरेडी लास्ट प्रॉब्लम में यूज करे, फिर भी और एक बार लिख रो, cos of 180 minus theta can be written as minus cos theta, right? Cos of 180 minus theta formula minus cos theta, cos of 180 minus theta means minus cos theta. What is theta value? C. Okay, again remaining as it is, cos of a minus b and minus cos square c. Clear? Okay, this one as it is, ये वन को as it is लिख रो, and minus c, cos c and cos c, इसमें भी एक cos c है, इसमें भी एक cos c है, दो में भी cos c. Okay, let cos c is the common, let cos c is the common, cos c is common means what is remaining? Cos of a minus b. What is remaining? Cos of a minus b minus one cos common completed, square is there, one cos common completed means remaining one more cos. Okay, cos c, right? So that implies one as it is, cos c also as it is, cos of a minus b also as it is, and now this one cos of c. What is c value? C value is 180 minus of a plus b. c के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन? 180 माइनस ऑफ a प्लस b. c वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, बाकी का पूरा एज इट इज.
1 as it is minus cos C as it is, cos of A minus B as it is, minus cos as it is. Capital C is 180 minus of A plus B. Okay, right. Now see 1 as it is minus cos C also as it is, okay, and into cos of A minus B also as it is, cos of A minus B also as it is, cos of 180 minus थीटा, इसको थीटा समझेंगे, cos of 1, ये माइनस सेम लिखो, ओके, ये माइनस सेम लिख के cos of 180 माइनस थीटा, ये A प्लस B को थीटा समझो, cos of 180 माइनस थीटा. What is the cos of minus 180 minus theta is minus cos theta, minus cos, what is theta? A plus B, okay, A plus B, right. So that implies 1 as it is minus cos C as it is, cos of A minus B also as it is, and now minus into minus plus cos of A plus B, cos of A plus B, clear? Cos of A minus B and minus into minus plus cos of A plus B, वो दिख रहा लास्ट में, okay, right. Cos of A plus B, okay, minus same लिखा, and cos of 180 minus theta is minus cos theta, okay, minus into minus plus, and 1 minus cos C. Now here again we have a formula, cos of A plus B plus cos of A minus B, cos of A plus B, प्लस वाला फर्स्ट लिख लो, बाद में माइनस वाला, प्लस cos of A minus B, and formula is 2 cos A cos B. What is the formula? 2 cos A cos B, cos of A plus B, cos of A minus B. ए प्लस बी वाला फर्स्ट लिखे, ए माइनस बी वाला लास्ट में लिखा, इसका फार्मूला क्या है फिर? 2 cos A cos B, so 2 cos A cos B, clear? Okay, that implies the final answer is 1 minus 2 as it is, okay, 2 as it is, first A term, okay, first A term, right, what is the A term? Minus 2 cos of A minus B, C, C means 180, okay, minus 2 cos of A minus B, okay, 1 minus 2 to 1 minus 2 into cos A and cos B into cos C, clear? Okay, so ये आंसर तो अलग आया ना अपने को, 1 माइनस 2 cos A cos B, कहाँ चले गया? माइनस, ओके, यहाँ पे देखो एक बार, माइनस cos C कॉमन है, माइनस भी कॉमन निकाले, बट यहाँ पे अपन माइनस लिखे प्लस होता, माइनस भी कॉमन निकाल दिए ना, सो माइनस कॉमन निकाले तो क्या होता है यहाँ पे? प्लस होता है, ये यहाँ पे माइनस लिख दिया अपन, माइनस cos C कॉमन मीन्स ये एज इट इज, यहाँ पे माइनस चले गए तो प्लस रहता, तो यहाँ पे प्लस, ओके, तो यहाँ पे भी प्लस होता, देन प्लस इंटू माइनस माइनस होता, ओके, माइनस रहा तो पूरा फार्मूला चेंज हो जाता, ओके, सो यहाँ पे फार्मूला चेंज होता अपने को, सो फार्मूला इज यहाँ पे माइनस, ओके, cos ऑफ A माइनस बी, cos ऑफ A माइनस बी माइनस cos ऑफ A प्लस बी, फार्मूला इज 2 sin A sin B होता, फार्मूला क्या होता? इक्वल्स टू 2 sin A sin B, ये फार्मूला क्या है इसका? 2 sin A sin B, तो यहाँ पे भी थोड़ा चेंज होता, ओके, सो इसमें cos of A minus B minus cos of A plus B means formula we have 2 sin A sin B, okay, clear? 2 sin A sin B, तो minus 2 लिख दिए, फर्स्ट A term, what is the A term? sin A, and what is the B term? sin B, what is the C term? cos C, ओके, यहाँ पे थोड़ा अपन क्या करें, इससे पहले माइनस कॉमन निकाले ना, माइनस कॉमन निकालने के बाद भी अपन यहाँ पे माइनस नहीं निकाले, प्लस माइनस डाले थे, सो इसलिए माइनस कॉमन चले गए तो प्लस, प्लस यहाँ पे प्लस, ये माइनस है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो cos ऑफ A माइनस बी माइनस cos ऑफ A प्लस बी, फार्मूला इज
2 sin a sin b। यहाँ पे प्लस आया समझो, 2 cos a cos b आता फार्मूला, अगर माइनस रहा तो 2 sin a sin b, so 2 sin a sin b, right? 1 minus 2, first a term, then b term, then c term, okay? This is the solution of third problem, okay? So ये आज के क्लास में क्या हुआ अपने को 7 मार्क्स मीन्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कितने प्रॉब्लम्स होगा? 3 प्रॉब्लम्स होगा, ओके राइट। इफ यू लाइक द क्लास, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके थैंक यू।